Good morning. So today we are going to conclude probability with the 7th number class on this subject. आज आमे देखिवा लास्ट एक्सरसाइज जोटा अछि एक्सरसाइज 6D रो क्वेश्चन नंबर 11 to 18. I'll solve all the questions one by one or similar type questions, or I'll give you a hint and you are going to solve the question. मु similar type question करिवि किंबा same question करिवि किंबा hints दे देबि. hints देखि के तुमे माने question solve करिवो. So first आसीबा question number 11. A pair of dice is thrown 5 times. Pair of dice is thrown 5 times. Find the probability of getting 3 doublets. Probability of getting 3 doublets. देखो ए टाइप रो क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर छ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर टू दिस. सेठी तुमको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लिखिया पड़तला. एठी डायरेक्ट फार्मूला पके के आनिवा अछि आंसर. तो मैं केवल जानिया पड़ियो p कोन, q कोन, n कोन, r कोन. सो प्रथम देखियो जस्ट आउथरे मु रिपीट करूची concept of binomial theorem. Concept of binomial theorem कोन कहूची? Probability of r success is equal to ncr p to the power r q to the power n minus r. p to the power r and q to the power n minus r. एटा हला हमर probability binomial theorem. So एठी binomial theorem रे सब बळे मल्टीपल ट्रायल्स हे छेबो. एठी मध्ये मल्टीपल ट्रायल्स हे छी. सो एठी ई क्वेश्चन रे n रो वैल्यू केते? n रो वैल्यू 5 times n equal to 5. So एठी r रो वैल्यू केते? सक्सेस r success probability of getting 3 doublets. So r is equal to 3. Then p कोन? p is probability of success in one trial. जदि तमे दीटा डाइस थ्रो करछो, what is the probability of getting a doublets? Doublets means कोन? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. So 6 cases favorable event ala 6. Then total number of outcome कोन? 6 into 6 36. So p is equal to 6 by 36 or equal to 1 by 6. q is equal to कोन? q is equal to 1 minus p. So 1 minus 1 by 6, that is equal to 5 by 6. So एठी तमरो तमे n जानि लो, p जानि लो, r जानि गलो, q जानि गलो. Then put the formula and get the answer. Simple. Clear? Next question को जीवा. Question number 11 है गेला. Question number 12. 4 cards are drawn with replacement. it मन रखो. with replacement और without replacement पूरा आंसर चेंज हबो. एठी देछि with replacement कार्ड बाहर कलो, पुणी आउतरे देखिले रखि देलो. From a pack of 52 cards, what is the probability that all 4 cards are diamonds? Only 2 cards are diamonds. None of the cards is diamond. 1 card, 2 cards, और none of the card is diamond. ताले एठी मध्ये सेम probability रो तुमको binomial concept apply करियो पड़िबो. हमें देखिबा what is the value of n. कितना कार्ड ड्रॉ करछो? 4 cards, one after another. So n equal to 4. p रो वैल्यू केते? p रो वैल्यू चेंज होबनी काहे ना विथ. अच्छा r तक हमें आसीबा. r ता चेंज हेछि. 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन रे r अलग अलग अछि. p रो वैल्यू केते? getting a all the 4 cards are diamonds. अच्छा, what is the probability of getting a diamond in the single draw? डायमंड आमर केतरा अछि? डायमंड अछि 13 टा.
So it is 13 by 52, 1 by 4, 1 by 4 যদি p is equal to 1 by 4 হয়ে গেলা q is equal to কেতে হবো 1 minus 1 by 4 that is equal to 1 by 3, n ଆସିଗଲା p ଆସିଗଲା q ଆସିଗଲା. Then question number 1 रे r ର value କେତେ? Question number all the 4 cards are diamond, r ର value 4. Question number 2 only 2 cards are diamond, so r ର value 2. Number 3 none of the cards are diamond, none of the cards are diamond means the value of r is 0. बर्तमान तमे पुट कर परिबो n is equal to 4, n is equal to r is equal to 4, r is equal to 2, r is equal to 0. आंसर आसी. नेक्स्ट टाइम जिबा क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13, in an exam there are 20 multiple choice question with 4 options. What is the probability that a candidate would score 80% or more? अच्छा, क्वेश्चन टा प्रथम बुझियो चेष्टा करो. फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. देखो टोटल देयर आर 20 क्वेश्चंस, टोटल 20 क्वेश्चंस. सो मु लिखि जाउची n equal to 20, n equal to 20. प्रत्येक क्वेश्चन रो आंसर भूल होबो कि ठीक होबो. So there are 20 questions means there are 20 trials. Then तमे एटा बाबो ओडे क्रिकेट मैच 20 टा बॉल पडियो, केतरा बॉल रे छक्का बाजियो, छक्का मींस आंसर दे देला. ओके, सो देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शंस. अच्छा, आंसर करेक्ट और प्रोबेबिलिटी केते मींस स्मॉल p इक्वल टू 1 by 4 होबो. कहीं चारिटा ऑप्शन रु गोटे ऑप्शन रे तमरो करेक्ट आंसर थिबो. p is equal to 1 by 4, q is equal to केते होबो 1 minus 1 by 4 that is 3 by 4. p जानि गलो, q जानि गलो. देन हमें आसीबा r. r कोन होबो? A candidate would score 80% or more score 80%. ताले देखो 80% मींस आउट ऑफ 100 80 टा ठीक करियर अछि. एडी केते अछि 20 अछि. 20 हेले केतरा ठीक करियो पडियो मिनिमम 16 टा क्वेश्चन ठीक करियो पडियो. से कहछि दिस इज इंपोर्टेंट 80% और मोर मींस 16 करेक्ट क्वेश्चन और मींस प्लस 17 करेक्ट क्वेश्चन प्लस 18 करेक्ट क्वेश्चन प्लस 19 करेक्ट क्वेश्चन प्लस 20 करेक्ट क्वेश्चंस. अच्छा देखो, सो तुमको बाहर करियार अछि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट विल स्कोर 16 करेक्ट और विल गो फॉर 16 करेक्ट आंसर और 17 करेक्ट आंसर और 18 करेक्ट आंसर्स और 19 करेक्ट आंसर्स और 20 करेक्ट आंसर्स. जदि एति की से करेक्ट करिवो ताले ता स्कोर ता कोन रहइवो 80. देखो एग्जैक्टली 80% कहतिले 16 नै थांता. 80% और मोर ताले ए सब केस रे 80% और मोर रहउची. सो r रो वैल्यू हमें केते पकेया फर्स्ट केस रे 16 पकेया. सो n 20c 16 into NCR p to the power r. p रो वैल्यू वाला 1 by 4 to the power 16. Then q रो वैल्यू 3 by 4 to the power 20 minus 16 that is 4. सेमती एटा कंटिन्यू हबो 17 18 19 20 सब जगह ऐड करिवो. ऐड कला परे तमरो आंसर आसी जिवो. देन हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट टाइम आसीबा क्वेश्चन नंबर 14 15 and 16. सो प्रथमे हम क्वेश्चन पढि के बुझिया देन मु तार हिंट देबी और तमे आंसर बाहर करियो. सो क्वेश्चन नंबर 14. A bag contains 7 balls. 7 balls
of different color, 5 balls are drawn, one after another with replacement. Remember, it are both important. With replacement, now without replacement. What is the probability that none of the ball drawn is white? What is the probability that none of the ball drawn is white? So सबुजा 17 कलर different color ball अछि, से भितर गोटे white ball भी अछि. So again हमरो आसी जेबो binomial theorem of probability. So एठी हमें देखिबा what is the value of n, how many trials are there, केते तक तमे ड्रा करछो, 5 times. So n equal to 5. Then what is the value of r? R kono, none of the ball drawn is white, means r equal to 0. R equal to 0. Then what is p? P is total how many balls are there? 7 balls. Probability of success, gotte hi white hoche kahi na sob jaga different color ro. So p is equal to 1 by 7. And what is q? Q is equal to 1 minus 1 by 7. 1 minus 1 by 7, that is equal to 1 minus 1 by 7 is equal to 6 by 7. So asigala sobu, none of the ball drawn is white, means value of r is equal to 0. Asigala p asigala, q asigala, r asigala, n asigala. Put the formula and get the answer. Next question ko ame jiba. Question number 15. Find the probability of throwing at least 3 sixes. At least 3 sixes in 5 throws of a dice. The agents are both important. Exactly na, at least at least 3 means 3 or 3 times or 4 times or 5 times. 5 throw କରୁଛ तमे at least 3 माने कोन कंसीडर करियो, 3 4 or 3 or 4 or 5. So एठी हमें देखिबा. So एठी n केते, what is the value of n? 5 throws, केतरा dice throw କରୁଛ, गोटे dice throw କରୁଛ. So n equal to 5. r केते at least 3 माने 3 or 4 or 5. 3 times you will get 6 or 4 times or 5 times. ये सब जगह ऐड करियो. Then what is the value of p? Probability of success. गोटे थ्रो रे तुमको गोटे 6 मिलियन probability केते, गोटे डाइस रे गोटे ही 6 थाउची. So p equal to 1 by 6. q is equal to probability of failure 1 minus 1 by 6 is equal to 1 minus 1 by 6 is equal to 5 by 6. आसीगला p आसीगला, q आसीगला, r भी आसीगला. So ऐड करिवो तीनटा, r वैल्यू 3 पकेबो, 4 5 पके, तीनटा जाको ऐड करले आंसर आसीगला. Then next question, the probability of a student securing first division is 1 by 10. What is the probability that 20 students will pass with first division out of 100? So what is the value of n? N hochi 100. What is the value of r? R hochi 20. Then what is the value of p? P hochi 1 by 10. What is the value of q? 1 minus 1 by 10, that is equal to 9 by 10. 9 by 10. So write down the process, put the value and get the answer. Remember, these all are long questions. Steps are very important. Steps तो माने लिखि परिबो. मु हिंट देली ताको तमे स्टेप रे लिखि गिरी आंसर बाहर करियो, चेक करियो बोइर आंसर सहित तमरा आंसर मैच होछि ना नाही. Then हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आसीबा हमें क्वेश्चन नंबर 17 and 18. Last 2 questions. अच्छा, प्रथम हम देखिए क्वेश्चन नंबर 17. Sita and Geeta throws a dice alternately till one of them gets 6
to win the game. Find their chances of winning if Sita starts first. देखो exactly ए टाइप रो similar question, same question, प्राय similar question हम करछे 6b question number 3. So आको हिंट दरकार नहीं 6b question number 3 आउथरे देखि दियो एटा तमे इजीली वर्कआउट कर दे पारिबो. Very easy. Then next question आसीबा, it's a different type of question, और wording के different अछि किंतु एटा थर तमरो एग्जाम रे बोर्ड रे आस्तेला. So very important again, if a random variable x has a binomial distribution b 8 1 by 2, then find x for which the outcome is most likely. माने से पचारिछि x equal to 0 होबो. देखो see b 8 1 by 2 आर मीनिंग होची n equal to 8, n equal to 8 and p equal to 1 by 2. ताले से कोन पचारछि फाइंड x माने r रो वैल्यू केते है. हमें लिखुचे डिस्ट्रीब्यूशन रे x इक्वल टू स्मॉल x, r कोन हे परिबो, r हमर कोन हे परिबो, और मु कहबी r बदले r और डिस्ट्रीब्यूशन रे हम लिखले स्मॉल x लिखुचे कोन हे परिबो, 0 हे परिबो, 1 हे परिबो, 2 हे परिबो, 3 हे परिबो, 4 हे परिबो, 5 हे परिबो, 6 हे परिबो, 7 हे परिबो, 8 हे परिबो. then p equal to 1 by 2 हले q equal to कोन हो 1 minus 1 by 2, that is equal to 1 by 2. so एठी तमु कोन करियार अछि गोटे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करियार अछि. सब उडाकर वैल्यू बाहर करिवो means n c 0 1 by 2 to the power 0 1 by 2 to the power n. तापरे कोन बाहर करिवो nc 1 1 by 2 to the power 1. n माने केते एठी, n माने एठी होची 8. ओके n माने 8, 8c 1 1 by 2 to the power 1 1 by 2 to the power 8, 8 minus 1, that is 7. then next कोन आसीबो 8 c 2 1 by 2 to the power 2, again 1 by 2 to the power 6. yes. so एमती आसिला परे तमो कोन देखियार अछि को केस रे तमरो r टा मैक्सिमम होछि. इट सब जो फ्रैक्शन जाग आसीबो सेही फ्रैक्शन गुडा करे कार वैल्यू सबटु अधिक, जार वैल्यू सबटु अधिक होबो. सो वैल्यू ऑफ x, सो सपोज एटी देखो तुम चेक करो आर 4 रे सबटु मैक्सिमम होबो. काई देखो डिनोमिनेटर रे तमरो डिनोमिनेटर डेफिनेटली 2 टू द पावर 8 आसो सब केस रे. न्यूमरेटर रे कोन आसीबो 8c0 8c1 8c2 8c3 8c4 अप टू कोते जीवो 8c8. सो 8c4 रे वैल्यू मैक्सिमम रहउची. सो चेक करिवो वैल्यू पकेबो. लॉन्ग क्वेश्चन ले डिटेल लिखियो पड़ियो, यू टू राइट डाउन. सो मेन थिंग इज ए जो वर्डिंग अछि आर मीनिंग तम बुझिया अछि. एठी n इक्वल टू 8, p इक्वल टू 1 by 2. सो हमें एठी आंसर आसीबो फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the outcome is most likely. most likely means probability सबटु अधिक. so एठी आसीबो the value of x is 4 where the happening of the outcome is most likely. answer आसीबो 4. so with this probability we completed all the exercise. doubts जदि किछि अछि comments रे लिखो, doubt clear होबो. most important thing probability 1 ru probability 7 step by step करियो पड़ियो.
तमे जदि 1 करिवनी 2 करि परिवनी 2 करन 3 करि परिवनी सो 1 आफ्टर अनदर प्रथमे 1 करिवो तापर 2 तापर 3 तापर 4 एमती जदि सीरियली 1 आफ्टर अनदर तमे करि गलो ता सहित एलिमेंट्स रो एक्सरसाइज गुडा कंप्लीट करि गलो देन प्रोबेबिलिटी क्लियर +2 बोर्ड रे भी किछि एग्जाम किछि तमरो प्रॉब्लम होबनी कि एनडीए एंट्रेंस एग्जाम रे मध्ये किछि प्रॉब्लम हो ओके थैंक यू वेरी मच